and we will talk about how to plan your interview for the best performance. In this video series, I am going to impart all my learnings and experiences of last 15 years, and we will understand lot of things related to investment banking, how to use ChatGPT and other artificial intelligence tools to make your job search journey easy and to actually clear your interviews. Mock interviews will actually bridge the gap of what is required in the interview and what you know. The common mistakes are related to resume preparation, introduction, handling the questions on your weaknesses, video series on investment banking interview tips and strategies. This is the first video in the series, and we will talk about how to plan your interview for the best performance. My name is Manoj Kumar, and I am the co-founder and trainer for Investment Banking Institute in Delhi. In this video series, I am going to impart all my learnings and experiences of last 15 years, and we will understand lot of things related to investment banking. So let me now show you what all we are going to cover in this video series. If you watch all these videos, I am sure that you will do much better in your real interviews. So just stay connected and let me just walk you through with what all topics we are going to cover in this video series. So on your screen you can see these are some of the topics that you can see. तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? जैसे पहला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट्स. We will understand what all departments are there in investment banking and what different types of job roles are available there. Strategic job search tactics, especially using LinkedIn. ठीक है. उसके बाद how to optimize your LinkedIn profile and how to increase your presence on LinkedIn so that when some recruiter looks for a profile related to financial analyst, then they land to your profile and they find a suitable candidate there, right? What are the tactics related to interview strategies? We will talk about interview strategies. How to prepare a professional CV which meets the requirement of the recruiter. We will fill the entire CV only with the relevant content. If there is something irrelevant but that has to be discussed, like internship or your previous experience, then we will give very less space in our CV, right? How to give a proper professional introduction that will have a lasting impression on the recruiter. And then after introduction, the entire interview will flow the way you want it to flow. There are so many HR related questions and you have to understand how to answer those questions. And there are weaknesses of each candidate. Weaknesses can be, let's say, you are a fresher, you have irrelevant experience. So these are your weaknesses. You have a 2-3 years of gap because you started preparing for some UPSC exam and now you did not clear those exams and you want to come back to your financial analyst profile. These are your weaknesses. So how you have to actually handle those weaknesses and actually convert those weaknesses into the opportunities for further discussion, right? There are ways, and I'm going to answer these. I'm going to address these issues in my video series. This is very important. Clarity in explaining the financial model. This is actually the problem with most of the candidates, because in the 3 months of training program, they learn how to prepare financial model for different companies. You need to now learn how to explain those financial models step by step to the recruiter, right? So we will come to that also. You have understood DCF valuation, relative valuation, merger acquisition, LBO, project financing. Okay, you have understood company profile, pitch book. But point is that there are questions that are asked. How to answer those questions so that the interview is controlled by you, not by the recruiter. Again, there are questions on IPO, FPO, questions related to capital market. And finally, we will also understand how to use ChatGPT and other artificial intelligence tools to make your job search journey easy and to actually clear your interviews. Okay, using ChatGPT, we are going to do a lot of things, especially the case study part. Nowadays, 80% of the companies give case study before their face-to-face round of interview, and you have to solve the case study in maybe 1 or 2 days,
and after successful submission of the case study, they will call you and then they will take you for the next face to face round of interview. Now how you can use chat gpt to solve those case studies, right? So these are some of the topics that I'll be covering in this video series, so stay connected and watch the videos till the end. This is the first video and the topic that you want to discuss in this video is this: when you go to the interview, plan your interview strategy. I have observed most of the candidates when come to me for mock interview or even in the real interview, they come without a plan. They have not thought of anything that what they want to discuss in the interview. They have studied their theoretical or some another practical content which I have given you. They study the question and answers, but still they do not have a plan. What do I mean by that? Let me tell you. When you go to the interviewer, you want to plan first, but all things you definitely want to tell the recruiter, and what are the things that you don't want to discuss with the recruiter. So what are the things that you want to discuss? Those things you can find out from the job description. Like you want to talk about Excel, that you know Excel, but it should be the requirement of the recruiter. You want to talk about financial statements and ratios. You want to talk about financial models. Okay, you want to talk about valuations. You want to talk about M&A and some another topics like company profile, pitch book, project financing, and many more things. So these are the things that you know. You want to find out which topics you want to definitely discuss with the recruiter now. And you also want to decide what all things you don't want to discuss. If the discussion comes on those particular weak points, weaknesses, then how you have to convert those weaknesses into opportunities for further discussion and bring the entire discussion on these areas. So your weaknesses can be, let's suppose, fresher. You are a fresher, it is a weakness. You may have irrelevant experience. You may have a gap of maybe 2 years or 3 years, or there may be something else, right? But generally the weaknesses are around these few parameters only: fresher, relevant experience, or you have relevant experience but you don't know why you want to change the profile. That is also a weakness. You want to change the profile. Why do you want to change the profile? So you want to prepare your answers, professional answers, and that answer should be accepted by the recruiter. So there are strategic answer for all your weaknesses, right? So you want to convert the discussion and bring the discussion only on these areas, the topics that you definitely want to discuss, and the interview should revolve around only those topics. Now you have decided that I want to discuss about financial statement, ratios, financial model, and valuation only in the interview. But how will you bring the discussion only on these topics? How will you make sure that the recruiter stick to these topics only? There are three ways. The first one, through CV. Second one, through introduction, and third is through question and answers. How you will do it? Through CV. When you prepare your CV, financial modeling and valuation projects should occupy most of the area in your CV. In your CV, you will mention everywhere that you know financial modeling and valuation. For example, the first part of your CV is your career objective. Second part can be summary of brief profile or summary of the candidate, brief summary. Then training and certifications, and then something else. Everywhere you will mention things related to financial modeling and evaluation, things related to the topics that you want to discuss. ठीक है? तो सबसे पहला पार्ट क्या हुआ आपका? करियर ऑब्जेक्टिव. तो करियर ऑब्जेक्टिव में भी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग से रिलेटेड ही चीजें लिखोगे. फिर उसके बाद आता है आपका करियर समरी. करियर समरी में हम 4 से 5 लाइन लिखते हैं. वहां पर आप की स्किल्स में भी फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन लिख दोगे. उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन. ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन में फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन के जो आपने 10-12 प्रोजेक्ट कर रखे हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स को आप लिस्ट करोगे. तो रिक्रूटर को पूरे सीवी के अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन, मतलब
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सेल, एमएनए, जो जो आपके टॉपिक्स हैं जो आप रिक्रूटर से डिस्कस करना चाहते हो, वो सारे आप इसके अंदर अपने सीवी के अंदर मेंशन करोगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपसे उन्हीं टॉपिक्स पर बात करेगा। नेक्स्ट वो आता है आपका इंट्रोडक्शन। पूरे इंट्रोडक्शन में भी आप अपने इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करोगे। मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है। बात को समझना। सीवी पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इंट्रोडक्शन पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स पे बहुत सारी सेपरेट वीडियोस बनेंगी, बट ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम समझना चाहते हैं कि ये जो इंटरव्यू स्ट्रेटजी है ये आपके पूरे इंटरव्यू का और इस वीडियो सीरीज का फाउंडेशन है। अगर इस पर ढंग से काम नहीं किया तो आपका पूरा इंटरव्यू इधर उधर भागेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है, ताकि एक जिस्ट आपको मिल जाए, एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि रिक्रूटर कहता है कि टेल मी समथिंग अबाउट यू, व्हाट यू हैव टू से, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। श्योर सर, माय नेम इज मनोज कुमार, आई एम born and brought up in Haryana, but for the last 3+ years I am living in Delhi. I have done my graduation in commerce honors in so and so year, and after that I did MBA in finance from so and so college in so and so year. In my MBA program I learnt lot of things related to finance, but I wanted to enhance my practical skills and become more employable for this profile. I also did a practical training program on financial modeling and valuation. In this 3 months of training program, I have learned exactly the same skills which you also require for this profile. Like sir, I learned how to prepare financial models, how to do the valuation of companies, how to do merger acquisition analysis. I also did some advanced techniques like LBO, IP analysis, project valuations, and company profile and pitch book. So just for an example, I prepared the 3-statement financial model for multiple companies like Netflix, Tata Motors, Kellogg's, Apple, APA Corporation. I also did the valuation of these companies with the techniques like discounted cash flow, company comparable analysis, company transaction analysis, and I also did an intermediate level project on merger analysis. These projects I have done absolutely from scratch. Like I prepared these models from blank Excel file. I not only know how to uh, do the financial spreading in the template, rather I can create the models from scratch. Same for valuations. I know how to do the valuation, how to update the data, how to take the assumptions. I also know how to create those models from scratch. I also did M&A analysis where I had one acquirer and another one was the target. I merged the companies, and after merger I checked the income statement and balance sheet of the acquirer and compared it with the pre-merger income statement and balance sheet, just to identify whether the deal will be accretive to the acquirer or if it will be dilutive. Sir, these are the skills which you are also looking for this profile. And sir, this is actually I wanted to share with you. If you want me to elaborate on something in detail, then please let me know. यहां पर आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब इस बात को समझिए, अगर आप ये इंट्रोडक्शन, इसमें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन अगर इस इंट्रोडक्शन को आप घर पे 5 बार 10 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, इफ यू विल स्पीक दिस इंट्रोडक्शन without practice at the time of interview, this introduction will not be polished. This cannot be a perfect introduction. You will fumble here and there. So practice it as much as possible, but it should not look at the time of interview that you have crammed it. You do not want to just complete your introduction, rather you want to convey your skills to the recruiter. आपको अपनी बात धीरे 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 बतानी है। सामने वाले को ये बातें जो आपने बताई इंट्रोडक्शन में वो याद रहनी चाहिए। तो कुछ बच्चों को मैंने मॉक इंटरव्यू में देखा है, वो रट के आते हैं इंट्रोडक्शन, लेकिन 30 सेकंड में 1.5 मिनट का इंट्रोडक्शन खत्म कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। आपको इंट्रोडक्शन देना है, सिर्फ अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं करनी है।
कि हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, ऐसे नहीं करना है। कोई इररिलेवेंट कंटेंट मैंने नहीं बोला कि मेरे फादर है, मदर है, ब्रदर ये करता है, सिस्टर ये करती है, कोई मतलब नहीं है। मैंने भी तो की होगी ना इंटर्नशिप, और उस इंटर्नशिप में मैं फलाना ढिमकाना काम किया था, नहीं बोलना अगर वो रिलेटेड नहीं है तो। आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है, रेलेवेंट हो सकता है, इरेलेवेंट हो सकता है, इनके बारे में हम रिज्यूमे जो प्रॉपर वीडियो में बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, उसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पर्पस था कि जो ये हमारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम रिक्रूटर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं इंटरव्यू में, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसको डिस्कशन में कैसे लेके आए, सीवी के थ्रू, इंट्रोडक्शन के थ्रू, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू इसको डिस्कशन में कैसे लाए, ठीक है। अब हो सकता है रिक्रूटर आपसे सीवी से सवाल ना पूछे, आपसे इंट्रोडक्शन के लिए भी ना बात करे, वो सीधा आपसे कोई फाइनेंस का क्वेश्चन पूछते। अब जब फाइनेंस का क्वेश्चन पहला उसके हाथ में है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा ये आपके हाथ में है कहीं ना कहीं, कैसे मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि मनोज टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय FCFF। अब जनरल आंसर क्या है उसको सुनिए, जनरल आंसर जो कैंडिडेट्स देते हैं और जो मैं बताऊंगा उसको भी सुनिए। सर, FCFF स्टैंड्स फॉर फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। Free cash flow to the firm is calculated with the following formula, like post-tax EBIT plus non-cash charges plus minus change in working capital minus capital expenditure। ये एक जनरल आंसर होता है, ये ज़्यादातर बच्चे दे देते हैं। मैं कहता हूँ 10% आगे बढ़ो, और उसमें आपको क्या कहना है, सर FCFF is this, FCFF can be calculated with this formula। Sir, very recently I was doing a course on financial modeling and valuation where I did the valuation of company Netflix or Apple or Kellogg's or Tata Motors, जो भी आप बोलना चाहें। I did the valuation of Netflix company and I applied DCA valuation. So in that particular project I actually used FCFF model only। यहाँ पर आंसर छोड़ दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स आपने क्या 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 किया, कैसे कैसे किया, वो सब बताना शुरू कर दोगे, नहीं। जो सवाल पूछा गया है उसका पूरा जवाब दे दीजिए, answer the question properly, and after answering it theoretically give a practical example and leave it there। Don't drag it too much that the question has no significance and what you want to tell you are just telling that। ऐसा नहीं करना है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए उसने कहा मनोज टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीटा। जनरल आंसर क्या रहता है, सर बीटा shows the sensitivity of the stock with respect to market index। if beta is 2 then it actually means that individual stock is 2 times riskier than the overall market। यहाँ पर आप इसको छोड़ देते हैं, जनरली आप बच्चे यहाँ तक छोड़ देंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, बीटा कैलकुलेशन का फॉर्मूला बता देंगे। मैं आपको इसे आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ। सर, वेरी रिसेंटली आई वाज डूइंग द DCA वैल्यूएशन ऑफ कंपनी एप्पल, and in the calculation of while doing the DCA valuation I had to calculate cost of equity, and in the calculation of cost of equity I used levered beta। यहाँ पर आंसर छोड़ दीजिए। अब प्रोबेबल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप खुद सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज levered beta, या फिर वो DCA वैल्यूएशन नेटफ्लिक्स के लिए जो आपने किया उसके बारे में बात करो। अब यहाँ पर एक और ट्रिक भी है। जैसे आपने कहा आई वॉज रिसेंटली डूइंग दी वैल्यूएशन ऑफ नेटफ्लिक्स कंपनी एंड आई यूज्ड लीवर्ड बेटा इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पर एक और सेंटेंस जोड़ दो, सर शैल आई गिव यू मोर डिटेल्स हाउ एक्चुअली आई डिड द DCA वैल्यूएशन ऑफ नेटफ्लिक्स कंपनी। रिक्रूटर क्या कहेगा कि नहीं 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 बताना। वो प्रोबेबल है कि वो बोलेगा कि ओके टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट। अब बात को समझिए, प्लान करिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप रिक्रूटर के साथ डिस्कस करना चाहते हो, और पूरे सीवी के अंदर उन्हीं टॉपिक्स को डाल दो, पूरे इंट्रोडक्शन में उन्हीं चीज़ों को डाल दो, और जो भी वो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर में एग्जाम्पल में, उसके आंसर में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थोड़ा सा छोड़ दो। अब उसके बाद जैसे आपने क्या कहा कि आई यूज लीवर्ड बीटा, उसने क्या कहा व्हाट इज लीवर्ड बीटा टेल मी। अगले 5 मिनट तक इंटरव्यू आपके हाथ में आ गया। कोई और क्वेश्चन लेके देख लो। अब जैसे वो आपसे पूछता है कि टेल मी द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, टेल मी द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ये उसका क्वेश्चन है। तो अभी जनरली आंसर क्या होता है,
You will tell the format of income statement, you will tell the definition of income statement, like income statement shows the performance of the company over a period of time. The format of income statement is like, the first item is net sales minus cost of goods sold, we get gross profit, minus selling general admin expenses, plus minus other income and expenses, we get EBITDA, earning before interest, tax, depreciation and amortization. After that we deduct depreciation and amortization, we get EBIT. EBIT is also called operating profit. Deduct interest expense, we get EBT. EBT is also called earning before tax or pre-tax income. We deduct current income tax provision and deferred income tax liability or asset. Then we get profit after tax before minority interest, minus minority interest, we get profit after tax after minority. Then we deduct preference dividend and common dividend to calculate our retained earning. We also have basic EPS and diluted EPS. Sir, I want to tell something more, that this format which I have told you is not the same format for all the companies. This is just one standard format, but company may or may not report its income statement in the same format, because I prepared the financial model for many companies where the income statement for different companies was different. Like for Netflix, for Apple, for Kellogg, for Tata Motors, or for APA Corporation. The income statement for all these five companies was different from each other. However, overall we have net sales, expenses and profit, but the items list can be different. यहाँ पर अपना आंसर छोड़ दीजिए, क्या चांस है? क्योंकि बताओ कि इनकम स्टेट में नेटफ्लिक्स में क्या था, एप्पल में क्या था, या एपीए मॉडल में क्या था, टाटा मोटर्स में क्या डिफरेंसेस थे? अब ये हमारे हाथ का, अब ये तो ये क्वेश्चन क्या है, ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। ये सब चीज़ें तो हमने प्रैक्टिस कर रखी हैं, इन क्वेश्चंस को हम अगले 5 मिनट तक इंटरव्यू हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मेरे को सिर्फ आपको इतना ही बताना था कि जब आप इंटरव्यू में जाएं तो एक एम्प्टी माइंडसेट के साथ नहीं जाना है, एक रैंडम माइंडसेट के साथ नहीं जाना है, चीज़ों को प्लान करके जाना है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिक्रूटर के साथ डेफिनेटली डिस्कस करना चाहोगे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिक्रूटर से डिस्कस नहीं करना चाहते। अगर डिस्कशन उन पॉइंट्स पर आ जाता है, उन वीक पॉइंट्स पर आ जाता है, उन वीकनेसेस पर डिस्कशन आता है, तो कैसे उसको आप कन्वर्ट करके अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पर लेके आओगे। ठीक है, और कैसे आप उन क्वेश्चंस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करोगे फर्दर डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया कि आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कशन में लाने के लिए सीवी में डिस्कस करोगे, इंट्रोडक्शन में डिस्कस करोगे, और क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू डिस्कशन को उन टॉपिक्स पे लेके आओगे। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको कैसे आंसर करें कि वो वीकनेस अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और एक बेटर एटीट्यूड आपका दिखाई दे कि भैया दिस इज द रियल कैंडिडेट, दिस इज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस प्रोफाइल। तो आपको क्या करना है, वैसे ये वीडियो सीरीज जो मैं बना रहा हूँ ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, but while making this video I just thought of uploading this video on my YouTube channel so that my YouTube family also get benefit out of it, and I'll also share this on my LinkedIn page where I have a LinkedIn family. I want them also to take benefit out of the knowledge which I'm imparting through this video series. So if you want me to upload all these videos on YouTube, then I want one favor from you. Please subscribe the channel, like this video, and now comment in the video what actually you liked about this video. Do you want me to specifically cover something in this video series, and what is your weakness and you don't know how to answer that or convert it into opportunity? Mention in the video. I'll try to cover that in my next video. Till then, thank you so much. And if you like this video, please like, comment and share this video. Thank you so much.